Good morning, dear students. I hope you all will be fine. So, today we will be starting with the revision of chapter number 1, that is living and non living things. Now, before discussing the things into detail, I will be showing you a clip. Let's have a look at the clip, okay? Living things grow, living things breathe, living things reproduce, and living things eat. Living things have their very habitat. Living things one day die a death. There are some of the things that make a living thing. You and me and the cat and the mouse, trees in our world and the worms underground, all need air and all need food. Beings like their own, they reproduce. They have their own special homes, all die when they lived for long. These are some of the things that make a living thing. Non-living things stay the same size. They don't grow and they don't die. They don't need air to breathe, and they don't need food to eat. They don't reproduce. Beings like their own, they don't need a place that they can call home. These are some of the things that make a non-living thing. The chair and the table, the car and the sand mound, the rock and the pebbles in the playground, all lie motionless and cannot move till someone pushes or gives them a pull. Lifeless and still they remain without a change. These are some of the things that make a non-living thing. Did you enjoy this song? तो ये सॉन्ग देखने के बाद इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव. हमने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा है दैट डिफरेंट एनिमल्स दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. Some animals like cow, goat, deer, they are herbivorous animal. Why? Because they eat only plant. Whereas animals such as tiger, lion, these are carnivorous animal. Why? Because they kill other animal and they eat those animals. But there are certain animals like foxes, bears, sparrows. What are they? They are omnivorous. Why? Because they eat plant as well as they kill the other animals. Okay? याद है ना कि भूल गए? And we also studied that all the living beings, all the animals, they need water. अब वो पानी कहाँ से पिएंगे? अपनी आसपास की जगह से पिएंगे. पॉन्ड में से पिएंगे, पडल में से पिएंगे, रिवर में से, लेक में से, है ना? एंड व्हाट अबाउट दीज प्लांट्स? दीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. भले प्लांट्स दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट उनको भी खाना तो चाहिए. वी स्टडीड इन वन ऑफ द चैप्टर्स दैट सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट है वो प्लांट ले लेते हैं, पानी भी लेते हैं. So plants are also living things. याद रहेगा ना ये? Now see here. Living things need air, sunlight and warmth to live. So एक चैप्टर में हमने पढ़ा था that different living things, different living beings, they use
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम विच दे कैन टेक इन द एयर. जैसे सी दिस frog can live in land as well as in water. So when it is on the land, it breathes through lungs. और जब वो पानी में जाएगा तो किससे ब्रीथ करेगा? मॉइस्ट स्किन से. In the same way, see, snake, monkeys, bird, they all breathe through lungs. Okay. Then, when you talk about the water animals, fish is the very best example. और fish कैसे सांस लेती है? गिल्स से. एंड इंसेक्ट्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था that all the insects they have tiny holes on their body which are called spiracles. उसी से तो वो सांस लेते हैं. एंड व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स को भूल मत जाना, दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. मैंने दिखाया था ना that on the surface of the leaf there are tiny holes present. The name of that hole is stomata. So stomata की वजह से एयर अंदर जाएगी और उसी स्टोमेटा से गंदी एयर बाहर भी जाएगी. एंड it is very difficult for all the living thing to live in the absence of sunlight. अगर सनलाइट नहीं होगी तो जीने में कितनी प्रॉब्लम होती है. अभी देखो इतने दिनों तेज़ बारिश थी, सनलाइट नहीं थी तो मज़ा आ रहा था क्या? कितना कंटाला आ रहा था. सनलाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. वॉर्म्थ मतलब प्रॉपर टेम्परेचर. बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए. Okay, one more characteristic which we will be discussing today is living things move. सभी living things except plants, they move. Why they move? In order to protect themselves from the enemy, in order to drink water, in order to have food. So they move from one place to another place. And डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट. जैसे हमने इंसेक्ट्स में देखा था, इंसेक्ट्स दे हैव लेग्स. कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग. एंड सम इंसेक्ट्स दे हैव विंग्स ऑल्सो. तो मूवमेंट तो होगी, इजंट इट? देन बर्ड्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट ऑल द बर्ड्स दे हैव 2 लेग्स with which they can walk, and many of the birds they have wings to fly. And some birds like duck, they can easily swim in the water with the help of their webbed feet. But when we are talking about birds, there are some birds who are very heavy in weight. मोटे हट्टे कट्टे तगड़े होते हैं. So they cannot fly. कौन कौन से ऐसे birds हैं? Ostrich, penguin, kiwi. These birds they cannot fly, but they can run and walk very fast. Such birds are called flightless birds. And आपने फिश को पानी में स्विम करते तो देखा ही होगा. किससे स्विम करती है? They use their fins. But ये देखो, what is this? Snake. स्नेक के कोई लिम्स नहीं होते. लिम्स मतलब चलने के लिए पैर तो होते नहीं. तो वो क्या करते हैं? दे स्लाइड. दे यूज़ देयर एंटायर बॉडी टू मूव. पूरी की पूरी बॉडी को यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए. एंड मैमल्स मतलब कि दोज एनिमल्स हु गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. बच्चों को जन्म देते हैं और उनकी बॉडी में बहुत सारे हेयर होते हैं. देखो आपकी बॉडी पे भी हेयर होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे देखो, होते हैं कि नहीं होते? सो मैमल्स दे हैव 4 लिम्स. अभी अगर एनिमल्स की बात करें, गाय की, बफेलो की, तो उनके 4 पैर होते हैं. हमारी बात करें तो हमारे तो 2 ही पैर होते हैं. बट मैमल्स दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स. But there are some mammals like otters, dolphin and seal which can swim also. Okay.
सो यहाँ तक का हम पढ़ेंगे, यहाँ तक का रिवीजन हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का रिवीजन करेंगे। तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है और मैं जो कुछ भी बोलूँ वो नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है, ठीक है? सिर्फ कॉपी नहीं करना, ओके?